मीर का। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shreyasa Vijay. Let's take a look at some stories of this week's episode. Local stage protest over shortage of hospital staff in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Indian Army organizes first ever women's cycle rally in Baramulla. Construction of houses in full swing in Katwa under Pradhan Mantri Awas Yojana. 400 houses already complete. Srinagar hosts 3-day district level Taekwondo Championship. And later in our section of Incredible India, we will take you to immerse in the celebrations of Ganesh Chaturthi across the country. The declining health sector has become a matter of serious concern for the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan. There is a wide spectrum of issues in this sector, among which the ubiquitous lack of doctors tops the list. Patients inevitably have to travel to major cities for better treatment options. Having reached the saturation point, people have started coming out on streets to protest against the issue. Recently, the locals in Yasin Valley of the district demonstrated over the shortage of staff in the government hospital. Locals in the Yasin Valley of illegally occupied Gilgit-Baltistan recently held a demonstration over the shortage of medical and technical staff at the area's government hospital. Their key demands include an immediate posting of a doctor and a technician, that too on a permanent basis. They allege that whenever they come to the hospital, there is no one to attend the patients. As a result, many serious patients could not even survive. इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज रात को नाजबर नाले में एक बेटी ने खुदकशी की और उसकी लाश यहाँ के तकरीबन ये 4 घंटे हो रहे हैं। यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कहते हैं कि कभी यहाँ हम आते डॉक्टर नहीं मिलता है, कभी टेक्नीशियन नहीं मिलता है। 1974 में ये हॉस्पिटल बना है, आज तक यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है। इससे पहले सिलिया रंग का एक बच्चा वहाँ कत्ल हुआ, हम यहाँ लाए, 6 घंटे तक हम इंतजार करते रहे। ये किराए में टेक्नीशियन लाने के लिए ढूंढते हैं और फरियादें करते हैं, मिन्नतें करते हैं और इनको शर्म आना चाहिए। इतने बड़ा इलाका है और इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ है, एक टेक्नीशियन यहाँ भर्ती नहीं कर सकते हैं। The geographic location of Gilgit-Baltistan and the topographical nature makes it prone to harsh climate conditions. Such vulnerabilities along with shortage of health facilities add to the woes of the people. Locals have been for long raising the issue of shortage of doctors and medical staff in the region, but the government has failed to address their problems, leaving them to suffer. Fed up with this apathetic attitude of authorities, the locals of Yasin recently threatened to increase the intensity of the demonstration if their demands are not met on an immediate basis. यासीन के अवाम को इस हॉस्पिटल इसके राह मुकरम पर हमें छोड़ा है। यहाँ आते हैं तो कभी जो है ना हमें गाड़ी नहीं मिलती है, कभी यहाँ गए तो डॉक्टर नहीं मिलता है, कभी टेक्नीशियन नहीं मिलता है। मैं हुकाम बाला को आगाह करता हूँ, अपील करता हूँ आप लोगों की वसातत से, मीडिया की वसातत से, खुदारा हमारे हालात पर रहम खाकर
यहाँ पे कोई टेक्नीशियन फौरी तौर पर तैनात किया जाए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो अस्पताल का हाल ये है, यहाँ खाने के लिए पैरास्टामोल नहीं देते हैं, यहाँ तेल के लिए कहते गाड़ी के लिए तेल नहीं है। खुदा के लिए इतना बड़ा इलाका है, एक एरिया है, यहाँ के आवाम के लिए जो ना सहूलत चाहिए। इस अस्पताल को जो ना ये इंसानों के लिए बनाए हैं, तो इंसानों को जो है ना यहाँ आसाइशात मैसर होनी चाहिए। पुलिस भाई हमारा डेड बॉडी भी हमें नहीं देते हैं, हमें एहतजाज भी करने नहीं देते हैं, और हमारे जो मुतालिबात हैं इनको काम बाला तक हम पहुंचा दे कि फौरी तौर पर यहाँ टेक्नीशियन तैनात किया जाए, और यहाँ लेडी डॉक्टर तैनात किया जाए, औदियात यहाँ दिया जाए, यहाँ आवाम को सहूलियत दी जाए। अदरवाइज हम इस एहतजाज को पूरा यासीन तक बढ़ा देंगे और पूरे यासीन के आवाम को हम रोड पे निकालने पे मजबूर होंगे। Over the years, the unemployment rate has been climbing up rapidly in Gilgit-Baltistan, and people here are in dire need of government assistance when it comes to healthcare and other forms of social security. However, Pakistan, on the contrary, has ensured that people in this illegally occupied region continue to reel under its misrule that provides a life riddled with discrimination and misery. It is said that any society that fails to harness the energy and creativity of its women are at a huge disadvantage in the modern world. Women nowadays are breaking all cultural, gender and social stereotypes and are making a mark in almost all fields. To boost their potential in sports activities, a women's cycle rally was recently organized in Jammu Kashmir's Baramulla district. Empowerment is not about rising above anyone. It is always about exploring one's own potential and being a better version of self. Different individuals and organizations all over the world keep on taking a number of steps to work for the empowerment of women. A similar step was taken by the Indian Army in Baramulla district, where a women-only cycle rally was organized to promote cycling and fitness activities among women. The idea of organizing a women's exclusive rally was conceived when, during an open cycle rally that took place on 13th August, women participants requested to have one such event. एक ओपन साइकिल रैली हुई थी जिसके अंदर सभी यूथ ने हिस्सा लिया था बारामूला से कमांड पोस्ट के लिए। उस टाइम पे बारामूला के बच्चों का जो लड़कियां थी उनकी एक रिक्वेस्ट आई कि ये ओपन मत करिए, एक हमारे लिए सिर्फ ओनली वुमेन इवेंट कीजिए। तो हमने उसके बारे में सोचा, हमने सोचा कि इससे पहले कि बर्फ पड़ जाए हम जल्दी से जल्दी इस इवेंट को कर सके। मगर एक महीने के अंदर जब हमने ये रीच आउट करा तो इतने लोगों का रिक्वेस्ट आया पूरे देश भर में से कि हम लोग इस चीज के अंदर, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी इसको मैनेज करने के लिए। Named Ride Kashmir, the rally was flagged off by actor, model and sports enthusiast Milind Soman along with his wife Ankita Konwar. It started from Shaukat Ali Stadium in Baramulla and terminated at the line of control near Kaman Aman Setu in Uri. Suman said that it was a great initiative as such events help women to come out and showcase their potential. बहुत अच्छा रहा आज का साइकिलिंग राइड। बारामूला से यहाँ तक ये है कमांड पोस्ट और शायद 65 किलोमीटर का अंतर था। द वेदर वाज फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगा, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे और खूबसूरती, जगह की खूबसूरती तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते कि इतनी खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी महिलाएं पूरे देश से यहाँ आके इन्होंने साइकिलिंग की और मुझे लगता है कि इनको देख के अगले साल अगर इवेंट होगा और मेरे ख्याल से होना चाहिए। Around 82 women from all across the country paddled across lush green roadways and serene hills to cover the distance of 65 kilometers. Among them, 50 were from Kashmir. At the end of the marathon, participants were felicitated with certificates and cash prizes.
wonderful ride. I am representing WDR, the team from Jammu. So glad to be in Kashmir, riding after such a long time. Never thought this could happen. All thanks to the Indian Army for organizing this. We look forward to more rides in Kashmir. And wonderful ride, beautiful views, and very well organized. I enjoyed the Kashmir ride, and first of all, I would like to thank the Indian Army. And this is my first time I have ride 65 kilometer. After 15 years, I had just pick up the cycle, and I have those handles, cycle handle in my hand. I cannot believe that 65 kilometer I have came here from Baramulla to Kaman. So this is a big achievement for me. I am proud for my achievement, and I'm taking as a ambitious initiative. So I would like to say, women, you can do each and everything. There's nothing जो आप नहीं कर सकते. Come and do whatever you can do, want to do. A number of music as well as dance performances were also organized on the sidelines of the event to cheer up the women participants. As women are said to be the building blocks of the society, the Indian Army keeps on taking a number of initiatives to encourage them and boost their confidence. A decent home is set to open the doors to improved health, better performance at work, greater economic opportunities and increased community cohesion. Considering the same, Housing for All by 2022 mission was launched by the central government in 2015 under the name of Pradhan Mantri Awas Yojana. In Jammu and Kashmir's Kathua district, the work under the scheme is in full swing and the construction of 400 houses is already complete. Have a look. This is Naresh Devi, a resident of Kathua's Ward number 9, whose husband Ram Swaroop was selected as the beneficiary of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. Naresh, who sewed clothes for her livelihood, once dreamt of a concrete house. But with the minuscule amount that she earns, getting a house was way too far. Under PMAY Urban, Naresh and her family were not just able to build a pakka house for themselves, but also got a relief from various problems, especially those caused due to climatic conditions. They received a financial assistance of 1.66 lakh, in which 1.5 lakh was given by the centre and 0.16 lakh was given by the state to build their house. ये हमारा मकान जो बहुत टूटा फूटा हुआ था, तो हमें रहने में, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी. फिर मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी, तो ये मैकेनिकल का घर का खर्चा नहीं चलता था. फिर जब प्रधानमंत्री योजना आई जो, तो हमने फॉर्म भरा कमेटी घर में जाके, तो उन्होंने 1,66,000 रुपया हमें मकान बनाने के लिए दिया. तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमें घर रहने के लिए अपना मेला बना हुआ. ऐसे बरसात में सारा पानी बीच में टपकता, बच्चों को पढ़ने में, काम करने में दिक्कत होती थी. तो अब हम खुश हैं, मतलब कि अपना मकान तैयार हुआ है. It's not just Naresh Devi in Kathua, but around 400 families in the district are enjoying the comfort of living in a concrete house under the scheme. And 570 more beneficiaries who were nominated under PMAU in the district will soon be enjoying this benefit. At present, the construction work of their houses is in progress. The work is undertaken by the Municipal Council Kathua, whose president Naresh Kumar Sharma said that our department is fully determined to provide a house to all in the district by 2022.
तकरीबन 400 के करीब हमने लोगों का सपना जो प्रधानमंत्री जी का था वो पूरा किया। और जिन लोगों का ड्रीम एक सपना था मेरा भी एक घर हो, जिन लोगों के पास घर नहीं था, गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, दिहाड़ीदार लोग थे, उन लोगों को हमने मकान बना के हमारी म्युनिसिपल काउंसिल ने वो दिए। तो आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसी स्कीम बनाई। और म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के अंदर 970 के करीब जो मकान हमारे सैंक्शन हुए, जैसे जैसे पैसे हमारे पास आते हैं, आपने देखा पिछले कल ही 1 करोड़ रुपया हमने लोगों के डायरेक्ट खातों में डाला और बैंकों को भी अदाई दिए। जैसे ही हम आपके अकाउंट में डालते हैं वैसे ही जो बेनिफिशियरी लोग हैं उनके खाते में चले जाए, ताकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2022 तक सपना है कि हर आदमी को छत मिले, वो हमने अपने टाउन के अंदर वो कंप्लीट करके हमने 2022 से पहले देना है। Launched on 25th June 2015, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban seeks to address the housing requirement of urban poor, including slum dwellers. Beneficiaries under this scheme include economically weaker sections, low-income groups and middle-income groups. People across Kathua who were living in poor condition expressed their gratitude to the Prime Minister for coming out with such a scheme. मेरा सपना ही रह गया, सारी उम्र में हमने देखा नहीं हमारा घर कभी बनेगा या नहीं। मेरे बच्चे बरसात में बैठते थे, छत सारी चोती थी। मैं खुद एक मजदूर आदमी हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो मेरा सपना जो साकार हुआ, मैं सरकार की तरफ का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे जो पार्षद हैं नरेश शर्मा जी, तो उनका बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। ये मकान बहुत पुराना था और ईंटों का बना हुआ था कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम इसे मकान बना सकें। तो इस वजह से जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम निकली थी, उस वजह से हमारा फार्म भरा हुआ था, वहाँ पे नंबर आया, तो हमने इस वजह से ये मकान का काम दिखाया। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत थी, बरसात में हमारा मकान बहुत छोटा था। इस वजह से ये उन्होंने स्कीम निकाली थी, हमने फार्म भरा तो नंबर आया। मैं प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गरीबों के बारे में उन्होंने ये स्कीम निकाली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। Shelter is one of the most basic needs, and the way the central government is taking steps to fulfill this need of people is really appreciable. In the recent years, martial arts has gained immense popularity among the youth of Jammu and Kashmir. There are many players who have already made a mark at the national and international level, and many more are in the row. To give wings to these young talents, a Taekwondo championship was recently organized in Srinagar. Have a look. Hundreds of young boys and girls congregated at the indoor stadium of Srinagar as they took part in the 3-day-long district-level Taekwondo Championship. Held after a gap of almost 6 years, the championship was organized under the Srinagar Smart City project and aimed to give boost to martial arts in the valley. The participants were looking quite enthusiastic and energetic during the event. They urged to have such championships every year so that they can get a platform to showcase their skills. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियनशिप था जो कि आज 6 साल के बाद हुआ है, जो कि रिकॉग्नाइज वाला है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है कि यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, वो भी टाइकोंडो का, क्योंकि यहाँ पे जे&के में टाइकोंडो का क्रेज बहुत ज़्यादा है बच्चों में। मैं बाकी लोगों को भी यही सजेशन करूँगी कि आप भी आए स्पोर्ट्स में। ये बहुत अच्छा है कि हम स्पोर्ट्स खेलें, इससे हमारी फिजिकल फिटनेस भी रहती है। और मैं चाहती हूँ ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो
डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स के भी इवेंट हो। और जो कश्मीर की लड़कियां वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती है गेम्स के लिए। ओलंपिक्स में भी टाइक्वांडो में अभी तक किसी इंडिया की लड़की ने मेडल नहीं लाया। कि मैं चाहती हूँ कि कोई इंडिया की लड़की ओलंपिक्स में मेडल लाए टाइक्वांडो में और अपने देश का नाम रोशन करे। Alongside the championship, a Taekwondo demonstration was also organized by the District Taekwondo Association of Shopian to impart self-defense training to children. As it took place, the stadium reverberated with the sounds of kicks, swings and punches. मार्शल आर्ट से बहुत ही फायदा है। आप देख लीजिए रिसेंटली जो हमारी गेम है वो कराटे है। एक्चुअली हम शोपियान से हैं, तो यहाँ पर ताइक्वांडो एसोसिएशन श्रीनगर इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन हमने यहाँ पर शो किया, डेमोन्स्ट्रेशन दी। तो मतलब ये जो गेम्स है ये तो ओलंपिक गेम्स है। जब कोई गेम ओलंपिक में होती है तो एक अलग ही क्यूरियासिटी आती है बच्चे में, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है। दैट इज़ वाई कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब आएंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओब्वियसली टैलेंट है यहाँ पर, तो वो नरिश करना है, उसको बाहर निकालना है। वो वैसे हो सकता है जब इस तरीके के टूर्नामेंट्स, इस तरह के फंक्शनें मुनक़द होंगी। सर, Martial arts has a wonderful history in Jammu and Kashmir, and there are several players from the state who have attained both fame and feat at national as well as international level in the game. Some of them include Surya Bhanu Pratap Singh. He won bronze at the 2018 Asian Games in Jakarta, becoming the first one from the state to achieve this feat. Azmat Bibi. She won bronze in the 9th Commonwealth Karate Championship held in South Africa's Durban in under 21 individual Komite 55 weight category. Hashim Mansoor, a 6-year-old boy who clinched gold in the sub-junior category at the Asian Youth Karate Championship in New Delhi, in which around 19 countries participated. In recent years, Jammu and Kashmir has been laying immense stress in equipping children with various forms of martial arts, either by hosting tournaments or by organizing workshops. And if this continues, soon the Union Territory will be able to produce a number of martial arts players for the country. One of the most popular and auspicious festivals in India, Ganesh Chaturthi, is a perfect mixture of culture, history and vibrancy. Celebrated in the honor of God of wisdom, Lord Ganesha, it is a much-awaited occasion, especially in the southern and western parts of the country. Today, in our section of Incredible India, let's see how amid coronavirus, people in India welcomed Ganesha this year with religious fervor and creative touch. Huge idols of Lord Ganesha, crowded tents and chants of Ganpati Bappa Moria reverberating in the air. All this marks the celebrations of the most resplendent festivals of Ganesh Chaturthi in India. Every year, people set up huge pandals, a temporary shed where they install a beautifully crafted idol of the elephant-headed god. This year too, a number of such structures ranging from COVID to other themes were set up across the country. In Ahmedabad city of Gujarat, a pandal showcased Ganesha portraying as a doctor wearing a white PPE kit along with a face mask and a stethoscope. The idol was seen rotating on a makeshift stage against murals of hospitals and quarantine centers painted on the backdrop. इस साल हमने वो जो हम सबने एहसास किया कोरोना में कि भाई क्या क्या तकलीफें पड़ी, क्या क्या देखा हम लोगों ने, कैसे हम लोग इस माहौल में रहे, वो सब हम दिखाने के लिए सब दिखाया हुआ है। लॉकडाउन दिखाया है पीछे, फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, फिर जो वैक्सीन का किया सरकार ने, हम बस उनके सपोर्ट में रह के सब करना चाहते हैं। Though this year grand celebrations could not take place amid coronavirus, but still people managed to keep the festive spirit alive with their creative ideas.
While in Gujarat, Surat, a woman installed a 201 coconut-made Ganesh idol at a mall in the city, a chocolatier in Punjab's Ludhiana city carved out a beautiful eco-friendly Ganesha of more than 200 kgs of Belgian chocolate. Another creative as well as an informative initiative was taken by an environmental protection group in Bhubaneswar. They dressed the tree as Ganesha to integrate culture with environment and spread awareness about environmental issues and deforestation. We don't want tree plantation to be just a mechanical event which people forget about it. You know, it is a relationship where you plant, nurture, and you also protect the trees, and that is why as much as we can associate with cultural activities where it is part of our lives, and so we have been doing it. In Pune, a devotee went a step ahead to mark his devotion for Lord Ganesha. Without disclosing his name, he offered a golden crown of 10 kilograms to Dagru Shet Halwai Ganesha that has become a special attraction at the temple. Mumbai's Lal Bagh Cha Raja, that forms the major attraction on Ganesh Chaturthi every year, went virtual this time. As per the data, on the first day itself, over 34 lakh devotees took darshan of Lord Ganesha through online mode. Several other temples of the city too allowed a few devotees and asked the rest to do online darshan. कोविड नियम को हम पूरा फॉलो कर रहे हैं. सबको बोला गया है कि मास्क लगा के ही यहाँ पे दर्शन के लिए आए और ज्यादा से ज्यादा घर बैठ के ही ऑनलाइन दर्शन कीजिए. Historical records suggest that Ganesh Chaturthi celebrations were initiated by Chhatrapati Shivaji Maharaj to promote culture and nationalism. However, it remained a family affair until freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak organized Ganesh Utsav in 1893. Every year, its festivities go on for 10 days, and on the last day, the idols are taken through the streets in a procession and immersed in a river or the sea. This immersion symbolizes the seeing off of Ganesha's journey towards his abode, taking away with him the misfortunes faced by mankind. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.